fingers crossed because we got to keep the budgets in check. वो काम नहीं रोकना चाहता, वो चाहता है 3 महीने में कंप्लीट करो. And I'm like, what about consultant charges? 2.5 से 4 लाख. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ Tad को मनीषा मिली है, tad तो जान होया है. हो गया हाँ बस Dad, you're so tall. ये वाला है ना, इसमें सब कुछ हो जाएगा. लैट पुल डाउन, सीटेड ड्रोज, बेंच प्रेस वगैरह सब हो जाएगा. जो उसके फेरी के जिम में वहाँ बीच में पड़ा हुआ था. हाँ ये वही है. हाँ जो नीचे बैठ के हम करते थे. हाँ ये तो होना चाहिए ज़रूर. बस इसी की तो कमी है हमारे उसमें. हाँ नहीं तो हमारे पास बाकी सामान तो है. तो एक ये मंगा ले. मंगा लेते हैं. करोगे यार दिन स्ट्रेंथ ट्रेन? हाँ क्यों नहीं करूँगी यार. तो जब शुरू कर दिया तो पैसे दूंगी तो फिर जो सौरभ को तो करूँगी सब कुछ. अब मैंने उसे बोला तू आके घर बैठ जाइयो, ये लोग करे ना करे तू बैठ जाइयो, तेरी फीस तो वो होगी. ठीक है फिर मैं कर रहा हूँ. 50,000 का. हाँ डीकैथलॉन से. हाँ जी. अच्छी है उनकी मशीनें. मम्मी आपने यूज ही किया. ठीक है हम बहुत महंगा नहीं मंगा सकते ना, बाहर रखना है. नहीं तो फिर हमारा कुछ दिन में तो ऊपर चला जाएगा ना, और कुछ महीनों में हाँ चला जाए तो ठीक है. हाँ ठीक है. बाकी और कितने का आता है अगर इससे महंगा लो तो? कोई लिमिट नहीं है. अच्छा 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख सब आता है. यही ठीक है. और फेरी का कितना तक का होगा? सेम. अच्छा यही से. मुझे सस्ते में मिला होगा बिकॉज बहुत पुराना है. हाँ तो ठीक है. फेरी वाला लोहा भी तो महंगा हुआ है, तो ये मंगा रहा हूँ मैं. ठीक है आप लोगों ने यूज नहीं किया, मैंने तो कर ही लेना है. हम भी करेंगे भाई. मेरे को तो उससे बैग की बहुत आराम मिलता है. हाँ जी we have placed the order. This is it, let us go. We have finally placed the order. Dinner looks fire. Fire. plastic का tree लेके आते हैं 6 feet tall at least. So that at least it's a huge tree and we can put it here, the tree. हाँ Or we can put it in the office. ऑफ देख लेंगे, यहाँ अच्छा लगेगा. We're planning to do something Christmassy. Let's go. anything for Diwali, but कभी we'll कुछ do किया all- नहीं हमने. हाँ जी. गुड मॉर्निंग टाडू. क्या हुआ जान? Oh yeah, I've been waking up early, but one thing's for sure, the friction in my mind is huge. Like I don't want to do anything once I'm up. Maybe because because of the cold. It's kind of cold. And maybe it's because I'm not sleeping enough. I slept at 12, woke up at 6. I think I need to sleep better. 8 hours. But pretty excited about the lifting rack. So that should be good. We have like a little visit from a designer today for the flats. So let's see how that goes. I've just been looking at computer storage space in the States and it looks so good. So this is a relative strength of 97 for this particular stock. But computer data storage space has a rating of about 3 out of 197 and looks pretty incredible. So just been looking at this all throughout. क्या होगी थी आपको? Naughty. Quick cup of tea. Then we go walkie. Thank you, G. Let me enjoy this cup of tea, Tad. Please. And the award for the most clingy bacha goes to Tad Barinder. Alright, here's the thing. When you open up a chart, what are you looking for? I say do a multi-time frame analysis and proceed from there. Now, what that means is that you start with a monthly chart, get to the weekly, and get to the daily. And if you're a very active trader, then get to the hourly. But if you see your stocks once in a while, the daily is just fine. We're going to look at this particular stock, and it looks brilliant on the monthly. In a weak market, let's check it out. This right here is the monthly chart, which basically means this is a 2007 resistance, a 21, a 25, and then finally breaches in 25 November. The move that we had from here to here was about 6,000%, and it retraced about 77%, right? Now, anyway, a stage 2 is established. Now we'll go to the weekly chart and see what's happening. We're seeing a nice follow through on the weekly chart. A strong close, a strong close. Here is where the stock paused for one whole week.
Could it be possible that this could be a basing action on the daily charts? Could it be possible? Of course, it has to be possible. So if I go to the daily charts, we see a little basing action here. I haven't bought this yet because of the market scenario, but it's not too late. Now, if you see right now, the stock is going up, struggling, going up and struggling, right? There will come a time where it will not struggle and it will go up. And then we'll be very, very excited to trade the move therein. So wait for better times. Let the market get better. Good times are coming. But a multi-time frame analysis is almost essential to you when you're trading stocks. Now it's some more scripting for True Basics. And that's what's going to happen. And then breakfast. This photograph was a gift. That's the bookshelf. If you see, looks neater than before, I guess. The office looks far neater. क्या प्लान है आज का? क्या प्लान है? बोलता जाऊंगा. So we got some aloo, some eggs, a sandwich. We got some sweet potato and veggies. Pretty beautiful meal overall. हाँ जी, ले लो. एक्चुअली पहले पता नहीं लगता था कौन कैसे जी रहा है. अब हमें बिलियनर की लाइफ भी दिखती है, हमें सेलेब्स की लाइफ भी दिखती है. तो हम कुछ भी कर ले अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी लाइफ कम लगती है. Okay, we have a preliminary meeting. Let's see how that goes. So ये यहाँ तक कवर्ड है. हाँ. और ये रूम कितने स्क्वायर फीट होगा? हमने नहीं, उसमें हमने 11.5 रखी है अपने आप. 1 फीट बढ़ाई है. पाउडर रूम करना हो या कुछ ड्रेसिंग रूम देना, वो काम नहीं रोकना चाहता. वो चाहता है 3 महीने में कंप्लीट करो. ये पूरी बिल्डिंग के अंदर अगर हम फ्रंट पे दरवाजे नहीं भी रखे हुए हैं तो सेफ है. यहाँ लुक अच्छी आ जाए. तो नेचुरली ये दरवाजा थोड़ा इम्पोजिंग हो. हाँ, एंड यहाँ से लिफ्ट है. ये वाला हम लोग पूरा एंट्री का दरवाजा करते हैं. हाँ, इसे एक घर की एंट्री मान सकते हैं. ये हम एक कमरा बना रहे हैं फिलहाल, तो अभी गाड़ी के लिए. बाद में हमारा ये सर्वेंट क्वार्टर या कुछ चीज हो जाएगा. और इसका टॉयलेट भी. So you see the flooring and you see the lift के आसपास marble. Very basic. Yes, boss. Now we're going to the other sort of building to see what we can do there. Okay. It is time to now go and lift. Pehla coffee piyange. A lot of work has been done today. We are seeking design expertise on a lot of things. So let's see how that goes. Fingers crossed. Because we got to keep the budgets in check. Jasmine and I will be funding this entire thing, so the budgets really need to be in check. Don't want to overspend. Not a fan. Okay, let's grab a coffee. Home sweet home. Ain't no place like it. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਗਰੂ ਅਪ ਔਨ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ, ਨੈਸਕੈਫੇ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਪਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਦ ਵਰਸਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕਾਫੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਡੇਵਿਡ ਆਫ ਤੇ. ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੀਗੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਡੇਵਿਡ ਆਫ ਪੀਆਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਨੋਟ ਅ ਡਾਊਟ. ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ. ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੈਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲਿਆ. ਫਿਰ ਨੈਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲੈ ਆਏ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨੈਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਪੇਚੀਨੋ ਵੀ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਲਾਟੇ ਵੀ ਬਣ ਜੂ. ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੂੰਗੋ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਬਲਿਨ ਪਿਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ as society evolves, the definition of good taste evolves. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ hedonic treadmill ਹੈ, ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ. We will upgrade our coffee machine the day we truly think we're not enjoying this coffee. Love this coffee, by the way. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਫੇ ਜਾਣਾ, I really prefer this coffee. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕਰਸ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਰਟੀਜ਼ਨਲ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁੱਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ that is something we'll spend on ਗੱਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ because if you're driving around in a car it should be comfortable subject to your budget and it should be safe subject to your budget music system ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰਸ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਟ just because ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਲੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ there's only so much that you should do and once you can afford things you realize this is all a treadmill that you're on and then you get an artisanal coffee machine फिर ਹੋਰ कुछ आ जाएगी right so there's no end to all this do what your heart truly desires don't worry about the rest ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਓ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਮਨੀ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਦ ਫਾਰਮਲਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਾਈ ਕਿਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਸਟਲੈਸ ਹੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਰਾਈਟ it is fine you do you there will be a person out there for you that will understand you and be like I adore you with all my heart and you should adore yourself with all your heart and I think that's basically life ਹਾਂਜੀ enough rant for one day ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ so anyway we talked to the designer How did that go? A bit tentative if you give all execution 250 rupees square feet for basic and I'm like what about consult and charges 2.5 से 4 lakh for design 3D electricals facade everything just the design Just the design, what do you mean? as in just the drawings But that doesn't, it includes everything, right? The furniture cost and everything. 4 लाख में फर्नीचर कॉस्ट आएगी अच्छा वो consult 4 lakh हाँ ठीक है हाँ 250 includes that because the previous quotation was 3,000 3500 plus 700 for facade so does this 2800 and 12 lakh consult क्या हाल है जी भैया कैसे हो करा दिया वर्कआउट हाँ जी करा दिया थैंक यू सो मच रिसेंटली पहले 2.5-3 साल ज्यादा नहीं था अब ज्यादा हुआ Anyway, good workout. Same stuff as before. I have 2 sessions in the evening, but before that I'll have lunch, have a protein shake, edit my Instagram, YouTube videos, all of that. Read, so basically a lot of stuff to do. Shower. Yeah, with God's grace, we're lifting, and lifts are satisfying. I got asked today for the first time at the gym how I lift so heavy. And I'm like, damn, son. Honestly, I don't know. Just keep going. Show up, man. Love the process. Everything will fall into place. Eat heartily, eat good, clean food. Meet your protein requirements, sleep very well. Emotional health has to be on point. And the rest is the divine grace. हाँ जी की पढ़े आज हो गया काम जमा हो गए पनीर दाल हैं
उनको भेज दिया अंबिका को Mata, भेज दिया अब Yasmin आप Kaur. Okay, now the market is shut. Lunch is done, everything's done. Let's see how we're basically looking at the market, the stock market overall. Now, if you see, the market is still below the 5 moving average, right? So tomorrow, if it closes below, perhaps we can test the waters, but abhi to usse bhi niche hai, so no point doing anything at all in the market. But yeah, I hope you guys are overall enjoying the videos. To be honest, I'm having a good time recording them. I get a bit candid out here, so naturally enjoying that a lot. Nifty, as far as large cap is concerned, has taken a bounce from the 50 itself, but we are still below the key moving averages, right? So let's see what happens. No need to rush, but good times may come, may not come. Whatever happens, we will be ready to take advantage of it. And thank you for joining. Now I'll get editing, etc, etc. Fir milde hain appa kal. These are scenes from the evening. Gaggujan is chilling. Vani is pretending to work. Vani, that's insubordination. Teri salary katunga. Hi, Jan. So beautiful. Chundari Mandir.